Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy of Sindh, faculty members, distinguished guests, graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Bahria University, I, Ahmad Mushtaba, And Hadia Shahid, welcome you all to the 20th convocation ceremony of Bahria University, Karachi campus. I now request the Registrar Bahria University to begin the proceedings of today's convocation by requesting the Chief Guest to declare the convocation open. Honorable Chief Guest, Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy of Sindh. Sir, I request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. Ladies and gentlemen, let us commence our program with the recitation of Holy Quran. I now request Mr. Muhammad Bilawal, a student of Masters in Islamic Studies, to kindly recite verses from the Holy Quran, followed by the Durood Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان तर्जुमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने बयान करना सिखाया। सूरज और चाँद सब उसी के मुकर्रर करदा हिसाब के साथ चल रहे हैं और सितारे और दरख्त सब उसी का सजदा कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
Jazakallah. Now I request Vice Admiral Retired Asif Khalik, Hilale Imtiaz Military, Rector Bahria University, to take the podium and present his welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy, Sindh. Director General Karachi Campus, Admiral Ghazanfar. Admiral Irfan, ex-Commander Karachi. Deans, principals, faculty members, distinguished guests, respectable parents and dear graduating students, Assalamu alaikum. It is with great pleasure and honor that I warmly welcome you all to the 20th convocation ceremony of Bahria University, Karachi campus. I am deeply thankful to our esteemed chief guest, Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy, Sindh, for gracing us with his presence despite his busy schedule. Sir, your presence today serves as a profound source of encouragement and inspiration for us all. On this momentous occasion, I extend my heartfelt congratulations to all the graduates, their families, their friends, and guardians, and I also commend the unwavering dedication of our faculty and staff, whose tireless efforts have been instrumental in shaping these bright minds. Ladies and gentlemen, today we celebrate the accomplishments of 368 graduating students of Bahria Business School, School of Maritime Applied Sciences, and PN School of Logistics and Management who will receive their degrees, with 517 being honored in absentia. I sincerely congratulate the graduates for their dedication, perseverance and hard work in reaching this significant milestone. I also acknowledge the invaluable support of their families, the commitment of our faculty and the tireless efforts of our staff, all of whom have been instrumental in this success. Dear graduates, as you move forward, I am confident that you are well prepared to excel as leaders in your respective fields. Distinguished guests, I am truly delighted to witness the growing number of successful graduates that Bahria University produces every year. Presently, we have over 22,500 students studying across 6 campuses in Islamabad, Karachi and Lahore, including more than 270 international students from 25 different countries worldwide. Pakistan Navy's vision of establishing a world-class university to provide quality education has indeed gained international recognition, and Bahria University is currently faring well in QS, Times Higher Education, and Green Matrix World University rankings. With over 160 accreditation programs, Bahria University is a leading institution offering diverse fields such as engineering, psychology, hospitality, law, management, and health sciences. The newly inaugurated Health Sciences campus in Islamabad, accredited by Pakistan Medical and Dental Council, is commencing MBBS classes this year. Our state-of-the-art facilities ensure high-quality education, modern resources, and a conducive, eco-friendly learning environment. Ladies and gentlemen, aligned with Bahria University's vision, our business school advances business and management education with 5 undergraduate, 4 postgraduate, and 1 PhD program, fostering academic excellence and leadership. Similarly, the Maritime Applied Sciences School offers 4 undergraduate and 3 postgraduate programs, while PN School of Logistics and Management runs an undergraduate supply chain management program for Pakistan Navy officers.
Notably, Behria Business School has made significant progress towards AACSP accreditation, a global benchmark achieved by only 6% of the world's top business schools. Acceptance of the initial self-evaluation report underscores our commitment to global standards, faculty excellence, impactful research, and an industry-relevant curriculum. My dear graduates, your professional life journey begins today. Your profession is related to business, economics, and management, which plays a key role in Pakistan's development. It is therefore imperative that you work hard with sincere dedication. I expect all of you to be good human beings, a source of great pride for your parents and family, and an excellent alumnus of Behria University, and above all, a worthy citizen of Pakistan. I again congratulate the graduates and wish you all the very success. Before concluding, I would like to once again thank the Honorable Chief Guest for gracing this occasion, and also to all our other distinguished guests and parents for joining us in this memorable ceremony today. May Allah keep you all blessed. Ameen. Behria University Zindabad, Pakistan Paindabad. I now request the Registrar, Behria University, for presentation of the candidates for conferment of degrees, please. Honorable Rector, Behria University, Sir, may the candidates be presented for conferment of the degrees. Let the candidates be presented. Now I request the candidates of PhD, MPhil, MS, MBA and Bachelor programs of Behria Business School, Behria School of Maritime and Applied Sciences, and Pakistan Navy School of Logistics of Karachi campus to rise for conferment of their degrees, please. I now request Director Campus to kindly request Honorable Rector Behria University for conferment of degrees to PhD, MPhil, MS and Bachelor programs of Behria Business School, Behria School of Maritime and Applied Sciences and Pakistan Navy School of Logistics candidates. Honorable Vice Admiral Retired Asif Khalik, Hilal-e Imtiaz Military, Rector Behria University, Sir, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of PhD, MPhil, MS and Bachelor programs of Behria Business School, Behria School of Maritime and Applied Sciences and Pakistan Navy School of Logistics, to which I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Rector of Behria University, I admit you all to respective degrees, and in token thereof I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees and charge you to prove worthy of the same. Now I request the Director Campus to kindly present Rector Behria University a folder containing list of candidates being awarded degrees in absentia. Honorable Rector Behria University, Sir, I request that these candidates who have been certified after examination to be duly qualified may be admitted in absentia to the degrees of MPhil, MS and Bachelors. By virtue of the authority vested in me as the Rector of Behria University, I admit them all in absentia to the degrees to which they are entitled. Ladies and gentlemen,
I now request candidates of PhD, MPhil, MS, and Bachelor programs to form up and receive the degrees from the chief guest. I request our Honorable Chief Guest, Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy of Sindh, to kindly award degrees to MPhil, MS, MBA, and Bachelor candidates. I also request Rector Bahria University and Director General Karachi Campus to accompany the Chief Guest. I now request the candidates of PhD in Management Sciences to receive their degrees from the chief guest. Tawseek Hamiyat is the 12th PhD graduate of the Management Studies Department, Bahria Business School, Karachi campus. Her main research work included employee emotional well-being in the service sector. She also presented her works on internationally reputed platforms, including the International Conference on Restructuring of the Global Economy, University of Oxford. Tawseek Hamiyat. Kanita Rahman is the 13th PhD graduate of Management Studies Department, Bahria Business School, Karachi campus. Her main research includes Islamic finance, sustainability practices, and Maqasidul Sharia. She presented her work on reputed platforms like the Third World Islamic Finance Forum, the IBA SBS International Conference. Kanita Rahman. Now I request the candidate of PhD in Computer Science to receive their degree from the chief guest. Noreen Hassan. Noreen Hassan has received PhD degree in computer science. Her thesis managed hybrid clustering techniques to improve 5G radio resource management. She has published numerous research articles and has presented her research on prestigious platforms like International Conference on Engineering and Technology in London. Noreen Hassan. Her father will be receiving her degree on her behalf. I now request the candidate of Master of Science in Project Management to receive their degree from the chief guest. Aisha Salimi. Sayyida Alina Shamim. Ayman Salam. Faiza Ali. Simra Moin. Sophia Hussain. Sania Irfan.
Now I request the candidates of Master of Science in HRM and Organization Psychology to receive their degrees from the chief guest. Amna Nasreen, Sukaina Zafar Sial, Amna Nasreen, Falak Malik, Varda Fahim, Saman Salim, Ikra Sattar, Fatima Hassan, Rafia Ali, Now I request the candidates of Master of Business Administration to receive their degrees from the chief guest. Nazneem Kausar, Zergul, Tuba Varis, Dr. Munazza Khan, Yamna Sohail, Fatima Liaquat, Fariha Shah, Banin Naqvi, Rabia Zahra, Tamkeen Zaidi, Muhammad Shujaat Ali Khan, Muhammad Nabil, Aisha Arshad, Aliza Zafar, Umme Kulsum, Muhammad Saklan Imran, Muhammad Taha, Muhammad Mushtaba,
Qasim Jamil, Muhammad Riaz, Naima Saeed Sufi, Tahreem Haider, Misbah Zahir, Komal Amjad, Lubna Naeem, Ayman Jilani, Madiha Hussain Samdani, Asad Khurshid, Samina Naz Khatak, Rohma Jahangir Awan, Hafsa Niaz, Naveed Hassan, Bisma Alina, Dr. Misbah Afzal, Tahira Sultan, Zara Khalid, Shabina Salahuddin, Jamil Ahmed, Aisha Khan, Aisha Ali, Maryam Nasir, Now I request the candidates of Bachelor of Business Administration to receive their degrees from the chief guest. Ali Haider, Sayyid Faridullah, Haris Khan, Ikra Faisal,
हमना इकराम अली, वजी रजा, सैयद मोहम्मद मूसा हसन, मिशाल आसिम, सैयद मोहम्मद ताहा, आतिका रिजवान, माहम सरफराज, हुदैबा अब्दुल कलाम, हुरमतुल जहरा, अक्सा अली लखानी, माहीन अतहर, अरीबा नरीजो, आयशा अली, लाइबा वसीम शाह, माहीन साजिद, बख्तावर तारिक, हुदा इकबाल, नादिया अहमद, शेख सुलेमान नसीम, राबिया मुस्तफ़ा, अनमता खान, अर्जुम जहरा, खदीजा अमीन, अनीशा, हिना अहमद रिजवी, फरा, राफिया शेख, सैयदा नमरा अली, मोहम्मद शुएब बारान, Ali Usama Haider,
सानिया खालिद महमूद, कुरुतुलैन मुफीज, आतका मनियार, हबीबा अफजाल, सहरिश गफार, जोहरा बलोच, बुरहानुद्दीन मुस्तफ़ा, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद हसन रिजवी, सिदरा नदीम, हमादुल हक, हमीदा शेरीन, फतेह उन्निसा, उरूज इरशाद अब्बासी, फातिमा रजा, अनुषा कमाल, मोहम्मद उनैस हैदर, तैयब अली, सैयद समरान तौसीफ, सैयदा सफीना बतूल रिजवी, जैनब सुमरो, दुआ खान, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद शाहरेज, दानिश महबूब, मोहम्मद उस्मान डार, इकराम अनवर, मोहम्मद असद, शिराज अली,
Muhammad Hamza, Obaidur Rahman, Muhammad Anas, Muhammad Hamad Rafiq, Wajiha Yusuf, Faryal Tabassum, Sayyida Umme Abiha, Muhammad Muneeb Somro, Sayyid Abbas Zaidi, Sana Saeed, Aliza Masood Khan, Sayyida Zara Kazmi, Rabia Osmani, Sayyida Faryal Zehra, Sayyida Abiha Raza, Maryam Naeem, Lubna Kaisar, Sobia Nemat, Noor Bano, Ramsha Shams, Fatima Sharik, Fatima Majid, Sabahat Khan, Sayyida Alvina Imam, Khizar Hussain, Abdul Wase Pirzada, Sayyid Umair Hussain, Sayyid Taib Ali, Mirza Muhammad Haris Beg, Mahira Sajid, Khalida Nasreen, Ali Shamsher,
Yaqub Bawani, Muhammad Ishaq, Salman Ahmed, Aliza Muhammad Aslam, Uruj Wasim, Sana Wakkar, Ahmad Abdul Sami, Ubaid Abdul Hafiz Khan, Ariba Altaf, Ariba Javed, Muhammad Talha Ishaq, Aisha Shakir, Sabahat Khan, Hassan Zafar, Sayyid Zishan Hussain Zaidi, Kinza Fatma, Saima Sumro, Maryam Ali, Afifa Amir, Shima Awais, Nadia Sarwar, Varda Aziz, her father will receive her degree on her behalf. Payal, Mahnoor Arif, Aisha Parvez Mangi, Mehreen Faiz, Mahjameen Iqbal, Hifza Khalil, Aisha Siddiqa Khan, Hafsa Salim, Uruba Yunus,
Muhammad Neek Raj, Abdul Hadi Javed, Muiz Faisal, Huria Khatak, Muhammad Qasim Shahab, Sayyida Anusha Rashidi, Umme Ayman, Muhammad Talal Siddiqui, Atif Suhail, Sheikh Muhammad Huzaifa, Sayyid Shehroz Hussain, Muhammad Bilal Noman Sabir, Warda Said, Rabia, Usaid Ahmed, Hafiz Muhammad Basit, Sayyid Muhammad Munib, Muhammad Samir, Hafsa Javed, Harim Fatima, Sumbul Mustaqim, Sayyida Shafaq Hasib, Iza Rehan, Kinza Wakar Beg, Said Khan, Sayyid Muhammad Rafe, Saad bin Javed, Ahmad Mustafa Awan, Mirab Javed, Maz bin Javed, Amina Sardaruddin,
सुमन बारी, मुश्तबा फाहद, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद शुएब, आदिल अशफाक तनोली, अदनान अब्दुल्ला, हिना रफीक, फरहाना शेख, मुस्कान फैसल, एमन अबरार, हसीबा कंवल, माहरूक, अबीरा मिर्जा, अरफा जुल्फिकार, मिसबा परवेज, रबिया मकबूल, मासूमा बख्तावर, उरूज फातिमा, सजल मसूद, अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल्ला शाह, मायरा अयूब, शहजाद खालिद, हिरा कुरैशी, सानिया अल्ताफ, ओसामा अरशद, दानिश वहीद, एहतिशाम जुल्फिकार अली, आयशा मंसूर अली, मोहम्मद उस्मान सोहेल,
Afifa Bano, Nazish Khan, Abdur Rahman, Ibadur Rahman, Hamail Sehbai, Huba Sehbai, Manal Adil Shah, Ali bin Noor, Muhammad Umar Ashraf, Sabah Kareem, Huda Javed, Muqaddas, Laiba Ishtiaq, Sayyida Kanza Abidi, Muhammad Minhal, Hamza Arshad, Sufyan Tariq, Nasser Baloch, Now, I request the candidates of Bachelor of Science in Accounting and Finance to receive their degrees from the chief guest. Sharjeel Hanif, Umaima Rashid, Muqaddas Hafiz, Ifat Naeem, Risha Khan, Mohammad Farhanuddin, Mohammad Wajahat Ansari, Mohammad Abdullah, Abdul Moiz, Muhammad Ali, Sayyida Rida Batul, Ayman Khan,
मलीहा खान, माहा तारिक, ताहा बिन सलीम, मोहम्मद साद, शमीन अहमद, हरीम शेख, अम्मार अली विरानी, सैयद मुर्तज़ा सज्जाद, फहद महमूद, अब्दुल हन्नान, सुनोबर हामिद, सुरखाब बट, मुनज़्ज़ा मंसूर, अक्सा अब्बासी, सना इकबाल, मरियम सुहेल, रुफैदा जैनब, उरूज कामरान गौरी, नेहा शाहिद, हिना तौहीद हसन, मोहम्मद बिलाल मुनीर, हुसैन इमरान, मोहम्मद हसन जैदी, मिसबाह हबीब, किंजा बतूल, उरूस खालिद, वर्दा सुहेल, मारिया बशीर, सिद्दीक वाहिद, निदा शाहिद, Now I request the candidates of Bachelor of Science in Economic and Finance to receive their degrees from the chief guest. Mohammad Zafar Siddiqui,
Anas Arif Hussain. Saira Usman. Sidra Khalid. Muhammad Faraz. Umme Eman Imran. Talia Yasin. Maheen Sajid. Hajra Furqan. Maria Iqbal. Samrina Iqbal. Mohammad Usman. Mohammad Tahir. I now request the candidates of Bachelor of Science in Maritime, Business and Management to receive their degrees from the chief guest. Muhammad Hasham Ahmed. Anfal Moin. Nazima Bibi. Hamna Reis. Saima Siddiqui. Rana Usama Tahir. Muhammad Samir Sultan. Fahad bin Arshad. Farhad Shafiq. Muhammad Jahzeb Sultan. Bushra Rafaqat. Anila Javed. Muhammad Zain Haider. Qazi Muhammad Abdullah. Muhammad Ahmed Nasir. Yahya Khan. Ramsha Rashid.
Mehpara Shehzad, Umme Amima, Now I request the candidates of Bachelor of Science in Supply Chain Management from Pakistan Navy School of Logistics to receive their degrees from the chief guest. Lieutenant Yasir Asa, Lieutenant Munib Siddiqui, Lieutenant Ali Abbas, Lieutenant Muhammad Bilal, Lieutenant Abdul Qadir Khan, Lieutenant Sardar Mir Balach Khan, Lieutenant Nadir PN, Lieutenant Ihsan Ali, Lieutenant Israr, Lieutenant Musaddiq Faryaz Khatak, Lieutenant Muhammad Saad Afzal, Lieutenant Hasib Abbasi, Lieutenant Talha Salim, Lieutenant Humayo Adil, Lieutenant Nasib Ullah, Lieutenant Arsalan Fida, Lieutenant Talha Tariq, Ladies and gentlemen, I now request the winners of the medals to kindly form up and receive their medals from the chief guest. Asadullah Maiman, Gold Medal, MS in Management Studies. His son will be receiving the medal on his behalf. Asadullah Maiman. Amna Nasreen, Gold Medal, MS in HRM and Organizational Psychology. Fatima Hassan, Gold Medal, HRM and OP. Ayman Salam, Gold Medal, MS in Project
Faiza Ali, Gold Medal, MS in Project Management. Aisha Arshad, Gold Medal, MBA. Naima Saeed Sufi, Gold Medal, MBA. Zargul, Gold Medal, MBA. Tuba Waris, Gold Medal, MBA. Aisha Ali, Gold Medal, MBA. Sayyid Muhammad Muneeb, Gold Medal, Bachelor of Business Administration. Hala Khalid Yusuf, Gold Medal, BBA. Misbah Habib, Gold Medal, BBA. Kinza Batul, Gold Medal, BBA. Talia Yasin, Gold Medal, Bachelor of Science in Economic and Finance. Muhammad Tahir, Gold Medal, Bachelor of Science in Economic and Finance. Lieutenant Abdul Qadir Khan, Gold Medal, Bachelor of Science in Supply Chain Management. Lieutenant Talha Salim, Gold Medal, Bachelor of Science in Supply Chain Management. Ladies and gentlemen, I now request the winners of the silver medal to kindly form up. Falak Malik, Silver Medal, Masters in HRM and OP. Rafia Ali, Silver Medal, Masters in HRM and OP. Mawara Kamal, Silver Medal, MS Project Management. Lieutenant Commander Sharjeel Ahmed, Silver Medal, MS Project Management. Komal Amjad, Silver Medal, MBA.
Ayman Jilani, Silver Medal, MBA. Lieutenant Commander Asadullah Buriro, MBA, Silver Medal. Hafsa Niaz, Silver Medal, MBA. Yamna Sohail, Silver Medal, MBA. Mariam Nasir, Silver Medal, MBA. Uruba Yunus, Silver Medal, Bachelor of Business Administration. Anas Anis, Silver Medal, Bachelor of Business Administration. Hussain Imran, Silver Medal, Bachelor of Science in Accounting and Finance. Muhammad Usman, Silver Medal, Bachelor of Science in Economics and Finance. Lieutenant Muhammad Saad Afzal, Silver Medal, Bachelor of Science in Supply Chain Management. Lieutenant Talha Tariq, Silver Medal, Bachelor of Science in Supply Chain Management. Now I request Rector Bahria University to kindly present the convocation souvenir to our honorable chief guest. Bismillahirrahmanirrahim. Vice Admiral retired Asif Khalik, Hilal Imtiaz, Rector Bahria University, Vice Admiral retired Khwaja Ghazanfar Hussain, Hilal Imtiaz, Director General Karachi Campus, Deans, Principals, faculty members, distinguished guests, respected parents and dear graduating students, Assalamu alaikum. But today I'm delighted to witness a good number of graduating students here from Bahria University. I think today's moment, while you were receiving your gold medals, silver medals and the degrees, that will probably be the happiest day of your life. An American poet, Henry Longfellow, if you have gone through the poetry of Henry Longfellow, you could recall a best poem he wrote to attribute the golden days of youth. A boy's will is the wind's will. He says in the poem, a boy's will is the wind's will, and the thoughts of the youth are the long, long thoughts. So today, while you are not only having the degree in your hand, but you are having long, long thoughts in your mind, and you are treading on the path, you are moving on the path
to get your destination, to reach your destination, but what exactly the destination is, that is the most important question for your life. I was just sitting on the Presidium. I was recalling my student life and those days when we were graduating from university. Fortunately or unfortunately, Asif Sahab, I am also an engineer. And my chief minister is also an engineer, and the chief secretary is also an engineer, and the speaker is also an engineer. So you can just imagine that how many degrees we spoiled. And we could not be successful engineers, but we became successful politicians though. So definitely ये आपके जो दिन है, आज डिग्री हाथ में लेके यहाँ से निकलना, दो एम्स होते हैं लाइफ में. जो सबसे सुप्रीम एम है वो है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द ह्यूमन काइंड, डेडिकेट योरसेल्फ फॉर ग्रेटर कॉज. सेकंड इज टू अर्न द ब्रेड बटर. जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, बच्चों को खिलाना है, माँ बाप को खिलाना है, और ज़िंदगी ऐसी इस साइकिल में गुजार के एक दिन दारुल बका की तरफ रवाना हो जाना है. दूसरा एम ये है कि आप ये रियलाइज़ कर लें कि जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास एजुकेशन है, जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, ये फ़कत आपकी ज़ात के लिए हैं, या इसमें आप कलेक्टिव एक कंट्रीब्यूशन की तरफ आप जाते हो कि आपको उसमें इंसान ज़ात को सर्व करना है. टू लीव द फुटप्रिंट्स, टू बिकम अ हेरल्ड, टू बिकम अ हार्बिंजर ऑफ चेंज. ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको पिक क्या करना है, चूज क्या करना है. मैं समझता हूं आपको एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए वाइल लिविंग दिस हॉल, कि आप उस खिते और तहजीब से ताल्लुक़ रखते हो जो 6000-7000 साल की तारीख पे मुहित है. आप उस सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हो. आपकी जो ग्लोरी, लॉस्ट ग्लोरी है, वो क्या है? आपका ग्रैंडर जो माजी का है वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम कश्मीर टिल केटी बंदर. आज का जो पाकिस्तान है ये बुनियादी तौर पे वादी सिंध है, कदीम वादी सिंध. दुनिया की वो अजीम सिविलाइजेशन जो बेसिकली साइंस का बुनियाद रखने वाली तहजीब थी. दुनिया का पहली इन्वेंशन द व्हील वाज इन्वेंटेड आइदर इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और धोलावीरा और लोथल. I remain Minister for Culture and Heritage. Whenever I used to go to the universities, schools or the colleges, मैं उस आपका जो फ़ख्रिया जो माजी है, जो पास्ट है, उसके बारे में हमेशा बताने की कोशिश करता था. आपने क्या क्या इन्वेंट किया उस ज़माने में? आपने व्हील इन्वेंट किया, आपने दुनिया का पहला स्क्रिप्ट, क्योनी फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट आपने इन्वेंट किया, आपने दुनिया का पहली इंडस्ट्री जिसने कपड़ा बनाया आपने इन्वेंट की, जिसको बाद में ग्रीक्स जो आए तो उसने इंडस, उसको सिंधु को इंडस कहा, तो बाद में उसने कहा कि इंडस्ट्रिया. द वर्ड इंडस्ट्रिया was basically primarily used by the Greeks and then it became industry. You can Google it. तो आप उस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हो. और आपको ये भी फ़ख्र होना चाहिए कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, जिसको ग्रीक्स ने एल्मा मेटर कहा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी टेक्सला से 16 किलोमीटर अंदर जूलियन, जिसके आज भी रिमेन्स और रुइंस पड़े हुए हैं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आपने बनाई. इस खित्ते के लोगों ने बनाई थी. दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी उस ज़माने में नहीं थी. जहाँ से कोतल्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े, वहाँ से पढ़े, जूलियन से.
बाद में ये ट्रांजिशन जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन की थी वहाँ से ग्रीस में गई, पर बदकिस्मती से कोई भी एक साइन ग्रीस में एंशंट यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता। फिर मुसलमानों के पास आता है। आज भी दुनिया की कदीम तरीन फंक्शनल यूनिवर्सिटी ट्यूनीजिया में है, जिसका नाम है अल जैतून, अल जैतूनिया यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो 8वीं सदी में, गालिबन 7वीं सदी ईस्वी में बनी। उसके बाद जो दुनिया की यूनिवर्सिटी वो अल कैरिबियन यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर आई हैड ए चांस टू विजिट दैट यूनिवर्सिटी इन मोरक्को, इन फेज। एक दो बहनों ने बनाई थी, फातिमा मैन लीडिंग वो खातून थी, वो लड़की थी बल्कि, जिसने उस यूनिवर्सिटी का बुनियाद रखा। और आज भी फंक्शनल यूनिवर्सिटी है जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़े, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इब्न खल्दून और बड़े बड़े नाम जो हैं मुस्लिम रेनेसांस के, वो वहाँ पे पढ़े। ये तो बाद में बनी। आपकी जो बोलोनिया यूनिवर्सिटी जो इटली में है वो तो 11वीं सदी में बनी, ऑक्सफोर्ड आपकी 11वीं सदी में बनी। ये कहानी जो है ये तो बाद में सेकेंड मिलेनियम से स्टार्ट होती है, इससे पहले नहीं थी। तो मुझे इस बात पे ये इसलिए मैं बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन इज टू लीड आउट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एजुकेशन नॉट मियरली अ सोर्स ऑफ योर ब्रेड एंड बटर, just to fill your belly with plenty of cheese and the layers of bread. Education is to lead out from darkness to light. ये रोशनियों से, अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने का सफ़र है। मुझे नहीं चांस मिला बहरिया यूनिवर्सिटी जैसी आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मुझे चांस नहीं मिला लाइफ में मैं किसी इलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता। मैं अपने गांव में नीम ट्री के नीचे पढ़ा। नीम का दरख्त होता था, सिंगल टीचर स्कूल था, उसके नीचे मैं पढ़ता था। हम बैठे, मगर परसुइट्स थी, एक थर्स्ट थी। थर्स्ट के बगैर कुछ नहीं है। प्यास खत्म हो गई, सब चीज़ खत्म हो गई। इंसान में प्यास होनी चाहिए। यहाँ से आप बाहर निकलते हो, प्यास बुझा के ना निकलो। बाहर गए, किसी फर्म में नौकरी मिलेगी तो आपको सब कुछ मिल गया। नो, endeavor, continuous endeavor with absolute zeal and fervor, तो फिर जिंदगी में जीने का मजा भी है। और जिंदगी में जीने का तो दूसरों के लिए जीने का मजा है, खुद के लिए जीने का कोई मजा नहीं है भाई। शिकवे जुल्मते, फराज साहब ने कहा था ना कि शिकवे, हम बैठ के रोना रोते हैं कि बस ये हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर वो इसलिए हम करते हैं कि हम इंडिफेरेंट हो गए हैं। फराज साहब ने कहा था कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमअ जलाते जाते। यू हैव टू लिट योर ओन कैंडल, तो वो करना है। बाकी जिस फील्ड में आपने लिया, आई एम सो हैप्पी कि आसिफ खालिद साहब यहाँ बैठे थे और मुझे बता रहे थे कि 22,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द बहरिया चेन ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं, एंड दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। आई थिंक मना ये बहुत बड़ा काम है कि जो हम ग्रेजुएट्स और कॉम्पिटेंट डिसिप्लिन्ड, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मैं बता रहा था आसिफ साहब को कि द डिसिप्लिन आई विटनेस्ड हियर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखता। बच्चे इधर आ होते हैं, उधर से गुजर रहे होते हैं, वहाँ से जा रहे। मुझे ये भी बताया कि आपको खड़ा किस तरह होना है कि देन यू विल गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द फोटोग्राफर्स। तो आई एम सो हैप्पी। आई वाज जस्ट शेयरिंग विद द आसिफ साहब के वी आर ऑफरिंग ऑलरेडी, दिस नंबर इज़ वेरी लो, कि हम कोई 10 स्कॉलरशिप्स स्कूल कॉलेज एजुकेशन की तरफ से ऑफ़र कर रहे थे। And I'm inviting Rector Asif के do come forward, sit with me, whatever you need, कि आपको कितने गरीब बच्चे मैं चाहता हूँ कि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ें और वहाँ पे एडमिशन लें। और from the day one when they get admission, I assure कि हमारे यहाँ बच्चे गरीब का इसलिए ड्रॉप हो जाता है कि उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता,
और वो हम कहते हैं, हमारी पहले पॉलिसी ये थी कि भाई बच्चा एडमिशन ले, एक सेमेस्टर के बाद हम उसको पैसे देंगे। तो ड्यू टू दी पॉवर्टी बच्चा ड्रॉप ही हमारा वहीं पे होता है जहाँ पे सेमेस्टर को पहली फ़ी पे करने का पैसा नहीं होता उसके पास। तो हम जो स्कॉलरशिप्स हैं सिंध के बच्चों के लिए, व्हेन आई बिकेम एजुकेशन मिनिस्टर इन 2018, हमने एक्सपेंड की, इंडोमेंट को हमने बुनियाद रखा और उसको बढ़ाया। आज कोई 7,500 सिंध के बच्चे पूरे पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में पढ़ सकते हैं। एंड I'll मैं अश्योर करता हूँ कि I'll increase the number of scholarships for Bahria and we will sit and figure it out. तो today I'm really glad, और मैं इनकी जितनी contributions हैं I appreciate। पाकिस्तान नेवी की वैसे भी एजुकेशनल हवाले से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक उनकी कंट्रीब्यूशन है। हम मिल के भी काम कर रहे हैं, और मैं काफ़ी स्कूल्स में भी गया हूँ। मनोरो में स्कूल हमने विज़िट किया, वहाँ पे बहुत से बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ने अडॉप्ट किया हुआ है। दे आर डूइंग मार्वलस जॉब। कैडेट कॉलेजेस हमारे पाक नेवी के साथ चल रहे हैं, और फ्यूचर में भी जितने फ्रॉम माई साइड इन माई मिनिस्ट्री जो फ्यूचर इंटरवेंशंस जितनी भी होंगी और कोलाबरेशंस होंगी, तो माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। डू कम फॉरवर्ड एंड लेट अस डू समथिंग good and best for the future of our students. So I'm grateful, और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आपके साथ, और इन ख़ास तौर पे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को मुखातिब होके। मगर एक बात याद रखनी है, यू आर द प्राउड descendant of that great civilization, and you have to regain the lost glory and the grandeur of your ancestors. Thank you. Bless you all. Pakistan Zindabad. Bahria University Paindabad. Now I request Registrar Bahria University to close the proceedings of today's convocation by requesting the Honorable Chief Guest Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy of Sindh, to declare the convocation closed. Honorable Chief Guest Sayyid Sardar Ali Shah, Minister of Education and Literacy of Sindh. Sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Ladies and gentlemen, this brings us to close our today's convocation ceremony. We thank you for your attendance. The academic procession will now depart. You are again requested to please rise and remain standing until the procession leaves.